बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम संगे खुगुमल करो टिकटॉक की उम्मीद लन तासबर जोड़ी खुशहाल हुई टिकटॉक में जैम तासर रोज तासमल करी करीम खान दे शॉर्ट होते इंग्लिश ग्रामर लेक्चर वीडियो सना ब्यात तास खिदमत के हाजिर ये माद दुआ सना जी चरतमी अल्लाह हाद बाद खुशहाल साता मलगरो द पैसिव वॉइस टिक कम सिलसिला शो रोदा पाई के मंगा नन द लास्ट टेंस खबर बको द फ्यूचर परफेक्ट टेंस खबर बको ची कयो जुमला द फ्यूचर परफेक्ट टेंस राशि पर एक्टिव वॉइस की दगा सेंटेंस बमंग पैसिव वॉइस ते सिंगे चेंज को दागे रूल्स दी कागद हर सिंगे सेंटेंस हुई क दगा सेंटेंस बमंग पैसिव वॉइस सिंगे चेंज को नन क्लास की बमंग दा सो खबरी को मलगर वागा पिंस द रूल्स बमंग रवाखलू नंबर फर्स्ट रूल दारी चे कम ऑब्जेक्ट द एक्टिव वॉइस अगर राशि द सब्जेक्ट से था द्वैम के बमंग हेल्पिंग वर्ब यूज को न पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज की द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल हैव बीन द फ्यूचर परफेक्ट पल हेल्पिंग वर्ब विल हैव द और द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल हैव बीन बमंग पर पैसिव वॉइस की यूज को द्वैम रूल दारे ची ऑलरेडी पति के थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की नो मागा फॉर्म पर पखपल से लगो सलोरन नंबर रूल दारे ची अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन पर लगो मेजॉरिटी केसेस के मुंगा बाय लगो आओ पिंजम नंबर रुलारे जिकम द एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट थे अब द ऑब्जेक्ट से तलाची मीन दागे न एजेंट जुड़ची वेरी सिंपल क्लास राजे ची उस पे यो सो सेंटेंसेस रवाखलू द पिंजवाना रूल्स बागे माने अप्लाई को मंगवायो शी विल हैव वॉश्ड द डिशेस शी विल हैव वॉश्ड द डिशेस ओ बर्तन दो चुकी होगी अगीब लूही इंजली क्लास ने जुमला के सब्जेक्ट शी दे विल हैव वॉश्ड पर एक वर्ब फ्रेज दे the active voice and the dish is padi ke recipient of the verb the mean action receive करे the object है तो the dishes बदी द जुमले मंगा subject को ची the dishes और द्वैम नंबर रूल ची कम दे वे helping verb will have been लगो ची the dishes will have been washed already third form दी न पखपल से बेरा कुछ को ची the dishes will have been washed बाय बोल लगो preposition और शी नवा ऑब्जेक्ट जुड़ को द हर जेत मतलब द ऑब्जेक्ट जेत बलॉट शी एजेंट बदे जुड़ शी हर तो द डिशेस विल हैव बीन वॉश्ड बाय हर क्लियर या मंगा क्लास वाई छे लाइबा विल हैव कुक्ड द फूड लाइबा विल हैव कुक्ड द फूड लाइबा खाना पका चुकी होगी क्लास लाइबा इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस विल हैव कुक्ड चिकम द वर्ब फ्रेज दी विल हैव पके हेल्पिंग वर्ब दी cooked पकी man verb दी और सिर्फ the food पकी चिकम दे receiver of an action दी object दी तो क्लास दा जुमले चमंगा कल passive द चेंज को the food बमंग द जुमले subject जुड़ को the food और helping verb लगो will have been so the food will have been cooked by Laiba simple class या क्लास मंगवाई छे Maria will have watched the match Maria will have watched the match. Maria match देख चुकी होगी क्लास Maria is the subject of the sentence. Will have watched चिकम दे आगा द जुमले verb phrase दे will have पके helping verb दे watched पके चिकम दे क्लास action verb दे और सशी the match कार पर match मान दे शवी दे receiver of an action match दे अब पके object दे object बते मंग मखे तरह वालू the match और the match पर से helping verb will have been दे जो the match will have been watched by Maria very simple class यो बल मिसाल पे अखलू मंगवाई छे Bilal will have driven the car Bilal will have driven the car Bilal is the subject of the sentence will have चिकम दी आगा will have driven पकी verb phrase दी will have पकी helping verb दी driven पकी action verb दी man verb दी the car पकी चिकम दी object दी recipient of the verb दी receiver of an action दी तो the car बाद जुमले subject कमा ची the car will have been driven by Bilal. Very simple. The car will have been driven by Bilal. The car will have been driven by Bilal. Yo the दो object to your sentence अखलू अक्सर मंगा अखलू. For example, छे I will have told you a secret. मैं आपको एक राज बता चुका हूँ मैं बताते हैं राज जो खबर कड़ी I will have told you a secret mean राज खबर क्लास यो खुदा मेहरबानी की चाहता दखल राज खबर में कोई दजान सर साथे है कि जिसता बेहतरीन दोस्त अखबल जान दे नो बल सोगता दोस्त नशी के दे I will have told you a secret नो क्लास I will have told you what? A secret. To whom? You. No class kata so there you ramahata kawizite da you ramahatakum che you will have been told a secret by me.
you बस बोलोगम will have been बोलोगम you will have been told सशी a secret by me by बोलोगम I बस subject कम अब कज़ित क्लास मिसाल पत्रों मानी a secret नाम है तो कोल गलमा ची a secret will have been told no the you know माकी बार told लगम the you know माकी बार sorry to लगम ची a secret will have been told to you by me क्लास दा सिंपल यो सादा सो सेंटेंसेस मंग के होदु राजी ची उस पे आगे यो सेंटेंस चे मंग शुरू कर दी चाहे भी तास तो मंग टूल स्ट्रक्चर वाइज information माहिती की दो मंगवा you will have called Hafsa आप हफ्सा को कॉल कर चुके होंगे मंग तब हफ्सा तकाल कड़ी में मंग अक्सर पढ़तो के से भाई तो क्लास हफ्सा दे जुमले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बदे जो कुछ हफ्सा will have been बोल लगो ची हफ्सा will have been called by you very simple hafsa will have been called by you class kada manga negative to already manga value chi will pas banat lagu chi you will not have called hafsa again class hafsa will be the subject of the sentence chi hafsa will not have been called by you will have been dre helping verbs the compound helping verb the humang will deal ko is a main helping verb no hafsa will not have been called by you kada se rashi class chi well you have called Hafsa well you have called Hafsa क्या आप हफ्सा को कॉल कर चुके होंगे तो क्लास अगेन हफ्सा बदे जुमले सब्जेक्ट को will बते मख के लगो ची will Hafsa have been called by you will Hafsa have been called by you will Hafsa have been called by you again very simple क्लास के जुमला नेगेटिव इंटरोगेटिव राशि ची will Hafsa not have called by you will Hafsa not have called by you क्या आप हफ्सा को कॉल नहीं कर चुके होंगे नो क्लास सिंपल हफ्सा बद जुमले सब्जेक्ट को विल बते मखत लगो ची विल हफ्सा और हफ्सा पर से नॉट लगो ची विल हफ्सा नॉट हैव बीन कॉल्ड बाय यू विल हफ्सा नॉट हैव बीन कॉल्ड बाय यू क्लास दैट वाज सिंपल लिखा चदा से जुमला राशि ची व्हाई विल यू हैव कॉल्ड हफ्सा Why will you have called Hafsa? आप हफ्सा को कॉल क्यों कर चुके होंगे तब हफ्सा तक कल वो लिखड़ी तो क्लास सिंपल खबर है why बप खबर जरा कुछ को हफ्सा वाले जुमले सब्जेक्ट को will बते मख क्यों लगो ची why will Hafsa have been called by you why will Hafsa have been called by you very simple कदा सराजी ची how will you have called Hafsa आप हफ्सा को कैसे कॉल कर चुके होंगे नो क्लास वेरी सिंपल how बप खबर जरा कुछ को हफ्सा बदे जुमले सब्जेक्ट को ची how will Hafsa have been called by you how will Hafsa have been called by you clear अब कहना है which when will you have called Hafsa आप हफ्सा को कॉल कब कर चुके होंगे the same when बपखपल जराशी हफ्सा will be the subject of the sentence and we place will before Hafsa ची when will Hafsa have been called by you when will Hafsa have been called by you if कदा से जुमला राशि ची why will you not have called Hafsa आप हफ्सा को कॉल क्यों नहीं कर चुके होंगे the same why बपखपल से राशि why Hafsa will be the subject of the sentence मुंग बते मख के will लगो ची why will Hafsa not have been called by you why will Hafsa not have been called by you if there is no subject if the subject is missing ka subject pake missing we subject pake नहीं वर्कड़ी मंगवाई चे who will have called Hafsa हफ्सा को कॉल कौन कर चुका होगा मतलब हफ्सा तब कॉल छा कड़ी who will have called Hafsa तो क्लास द सेम by whom बोलोगो whom mean whom हम चेंज को whom था by whom और will बोलोगो by whom will Hafsa have been called by whom will Hafsa have been called clear हो कच्चा तो क्लास पर कि ऑब्जेक्ट मंग सर नहीं मालूम ऑब्जेक्ट पर कि नहीं लगा मंगोई चे whom will you have called आप किसको कॉल कर चुके होंगे whom will you have called so in this sentence the object is missing because we do not know who is the receiver of an action जे कॉल बता चाहते कड़ी clear no class whom न बमुंग जुड़ को who will have been called by you who will have been बद्रेवाना लगो helping verb who will have been called by you class panan class के मंगा the future perfect tense पर हवाले सरा स्तासु मखे त तमामी sentences के हो दो
امید لرم چې تاسو به ستاسو کنسپټ لر شي دیم بشانت نور خپل جملې جوړ کړئ مونږ ته راولېږئ په واتس اپ راولېږئ په کمنټس کې راولېږئ په څه طریقې سره ځان پوهې کې زموږ مطلب ستا د پوهې نه تاسو پوهې شئ زموږ چینل کې انګلیش ګرامر سیریز خپل هم سبسکرایب کړئ ملګرو سره شیر کړئ چې خلکو ته د فایده وشي. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.